A very good evening to all. This is Ruby Ahuja, and today we are going to discuss about some gold market fluctuation. और डिस्कस करने से पहले एक बार जानना चाहेंगे कि आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियरली ऑडिबल है और स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है। इफ़ यस काइंडली प्रेस 1 ताकि हम लोग आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट कर सके और डिस्कस कर सके सारी चीज़ें। प्रेस 1 इफ़ माय वॉइस इज़ क्लियर टू यू एंड माय स्क्रीन इज़ प्रॉपर्ली विजिबल टू यू ताकि हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस कर सकें और देख सके कि आगे का मूव कैसा रहेगा आज मार्केट का। ओके सो देख सकते हैं वन डे कैंडल की बात करें तो आज की ओपनिंग 1763.81 पे, प्रीवियस क्लोजिंग 1766.75 और सॉरी हाई हम लोग को 1766.75 का देखने को मिला। 1758.78 का लो बनाते हुए फिलहाल 1753 के लेवल्स पे मूव करते हुए 15 मिनट कैंडल पे आ जाए तो अभी एशियन सेशन ओपनिंग का टाइम और हम लोग यहाँ से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बाय बाय मार्केट करेंगे। तो हम लोगों ने अपना 2 कॉन्ट्रैक्ट बाय बाय मार्केट किया हुआ है इस लेवल पे। उम्मीद यही है प्राइसेस अब एक बार अपसाइड स्पाइक मारते हुए 1755-56 तक के लेवल्स दिखाते हुए मिले। एशियन सेशन ओपनिंग का टाइम हम लोगों ने आते ही अपनी पोजीशन को बाय साइड बनाया है और हमारी पोजीशन प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई। उम्मीद करें एक बुल ग्रीन कैंडल के साथ 1755-56 तक के लेवल्स देखने को मिले। पूरी उम्मीद कर रहे हैं बुल ग्रीन कैंडल की 1754.97 1755 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए। पूरी उम्मीद कर रहे हैं एक अपसाइड मार्केट 1757 हमारा टारगेट होगा। सो 1755.2324 और हम लोग अपनी पोजीशन को पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। ग्रेट, हम लोगों ने मार्केट में एंट्री की बहुत ही सही टाइम पे एंड ओके सो 1753.91 पे हम लोगों ने एंट्री की थी। 1755.26 के लेवल पे एग्जिट करके $270 के प्रॉफिट जनरेट करते हुए मिले और देख सकते हैं मार्केट अभी भी अपसाइड राइज करती हुई 1756 के लेवल्स बनाती हुई। हमारी एक और पोजीशन बाय करने का मन हो रहा है जो कि हम लोग वापस से एक बार बाय करेंगे 1755.47 के लेवल्स पे वापस से हम लोगों ने एक बार बाय कर लिए पोजीशन। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा। इफ यस काइंडली प्रेस 10 ताकि हम लोग आगे डिस्कस कर सकें।
तो हम लोगों ने वापस से अपनी एक पोजीशन को बाय किया हुआ है 1755.8788 के लेवल्स पे मूव करते हुए प्राइजेस फिलहाल उतनी तेजी नहीं दिखा पा रहे हैं अभी। 1756.3443 के लेवल्स वापस से एक बार अपसाइड स्पाइक मारते हुए मार्केट पूरी तरीके से अपसाइड रिबाउंड करती हुई हम लोगों ने अपनी पोजीशन बाय की हुई है और देख सकते हैं ट्रेड हिस्ट्री में तो हमारी पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है। थोड़ा सा वेट करेंगे अच्छे प्रॉफिट जनरेट होने का और अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए बनेंगे। सेवनटीन 56.03 1755.99 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए वापस से थोड़े से करेक्शन दिखाती हूँ मार्केट स्टेबिलिटी के साथ। वापस से थोड़े से करेक्शन 1755.0919 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए 1754 के लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने अपनी पोजीशन को बाय बनाया हुआ है इस उम्मीद में कि प्राइसेस एक बार अपसाइड मूव करते हुए दिखेंगे फिलहाल थोड़े से करेक्शन के साथ। सेवनटीन 54.6779 के लेवल्स वापस से थोड़े से करेक्शन के साथ 1 मिनट कैंडल की बात करें तो थोड़े से करेक्ट होते हुए देख सकते हैं मार्केट वापस से करेक्शन के साथ 1754.35 स्टेबिलिटी के साथ 1754.6970 के लेवल्स थोड़ी देर प्राइस का मूवमेंट देंगे और देखेंगे मार्केट का मूव किस डायरेक्शन में है। बाय द वे हम लोगों ने अपनी पोजीशन प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर ली थी। सेवनटीन 54.7 के लेवल्स बनते हुए मार्केट थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाते हुए फिलहाल देखने को मिल रही है।
और थोड़ी सी करेक्शन के साथ एक शॉर्ट ग्रीन रोजी कैंडल बनाते हुए मार्केट में आज बहुत ही अजीब मूव रहा, क्योंकि 1767 तक के टारगेट्स दिखाने के बाद हम लोग की उम्मीद नहीं थी कि इतने करेक्शन देखने को मिलेंगे, बट स्टिल बहुत सारे करेक्शन देखने को मिले। वापस से थोड़े से स्पाइक लेते हुए 1755 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1755.7274 के लेवल्स वापस से एक बार स्पाइक मारते हुए हम लोग उम्मीद करें थोड़े से अपसाइड मूव देते हुए दिखे, तो हम लोग की ये पोजीशन प्रॉफिट्स में आती हुई दिखे। देख सकते हैं ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड हम लोग की देखने को मिल रही है। 1756.0305 के लेवल्स। और हमारी ये भी पोजीशन प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती है, जल्दी हम लोग इसको भी क्लियर कर लेंगे। सो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और अपने पोजीशन को क्लियर करते हुए बनेंगे। ओके, सो हमारी पोजीशन अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती है और हम लोग अपनी पोजीशन को यहीं से क्लियर कर लेंगे। हम लोगों ने अपनी पोजीशन को क्लियर कर लिया है। दो पोजीशन हम लोगों ने क्लियर की है फिलहाल, एक $156 के प्रॉफिट के साथ और दूसरी हमारी $270 के प्रॉफिट के साथ। 1756.96 1757 के लेवल्स, जैसे कि मार्केट से पूरी उम्मीद थी। 1757 के टारगेट्स वापस से बनते हुए मार्केट में। 1756.9192 के लेवल्स। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अभी मार्केट का मूव काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं किसी और मोमेंट पे। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे मार्केट का मूव देखने के लिए। 1757 पे प्राइजेस मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। 1757 से वापस से एक बार करेक्शन थोड़ी सी।
1756.6475 के लेवल्स और एक दूसरी कैंडल हमारी 15 मिनट कैंडल, दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 1756.57 के लेवल्स पे मूव करते हुए वापस से मार्केट एक बार स्पाइक लेती हुई प्राइजेस वापस से एक बार स्पाइक के साथ 1757.67 और हम लोग अपनी जो पोजीशन बना रहे हैं एक और बाय की बनाएंगे यहाँ से, बिकॉज जहाँ तक उम्मीद लग रही है 1760 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हम लोग पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करके आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। सेवनटीन 57.98 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए वेट कर रहे हैं हम लोग अभी और अपसाइड डायरेक्शन का और उम्मीद करते हैं 60 तक के टारगेट्स वापस से देखने को मिले। 1757.4748 के लेवल्स। मार्केट जिस तरीके से स्टेबिलिटी दिखाती हुई दिख रही है और देख सकते हैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की बात करें तो पूरी तरीके से अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। क्रॉसओवर देखने को मिल चुका, पूरी उम्मीद है कि एक बार अपसाइड स्पाइक देते हुए मार्केट वापस से अपसाइड राइज करती हुई दिखेगी, बिकॉज इस टाइम एशियन मार्केट ओपन है और एशियन मार्केट सेशन हम लोग को अपसाइड होती हुई दिखती है। जब पूरी मार्केट डाउन जाती है तो एक बार एशियन सेशन ऊपर आती हुई दिखती है। 1757.27। 1756.7172 के लेवल्स। सेवनटीन 56.1614।
वापस से जरा सी करेक्शन दिखाते हुए 1756.0506 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए थोड़ी सी करेक्शन के साथ वापस से थोड़ी सी करेक्शन दिखाते हुए 1755.4241 के लेवल थोड़ी सी करेक्शन दिखाते हुए 1755 के लेवल्स पे वापस से मार्केट करेक्ट होती हुई 55.2328 के लेवल्स बनाते हुए थोड़ी सी करेक्शन के साथ इस टाइम हमारा पूरा फोकस मार्केट की फ्लक्चुएशन पे ही है। हम लोगों ने एक और पोजीशन हम लोगों ने अपनी 3 पोजीशन क्लियर की हुई है और फिलहाल चौथी पोजीशन हमारी होल्ड पे है। 1756 के लेवल्स बनते हुए थोड़े से अपसाइड मूव करते हुए मार्केट 1756.35 1756.6343 के लेवल्स बनते हुए 7 मिनट बाद इस कैंडल की भी क्लोजिंग का टाइम देखते हैं मूव कैसा देते हुए दिखती है। फिलहाल वापस से थोड़े से करेक्शन मार्केट में बनते हुए दिख रहे हैं। 1756.3132 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए
वापस से एक बार अपसाइड स्पाइक आती है 1756.8182 के लेवल, प्राइसेस अपसाइड राइज करते हुए। वापस से एक बार अपसाइड स्पाइक 1757.3637 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए, थोड़े से अपसाइड राइज के साथ आराम से ट्रेड ले रहे हैं और आराम से प्राइस का फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। मार्केट का मूवमेंट पूरा अपसाइड है 1757.2630। 1758.3038 के लेवल्स और हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रेड पे, तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट साइड कन्वर्ट होती हुई। थोड़ा सा वेट करेंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिखेंगे 1758.3740 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए। सेवनटीन 58.35 के लेवल्स, थोड़े से अपसाइड मूव और हम लोग अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए दिखेंगे यहाँ से। 1758.4551 के लेवल, 1758.596067 के लेवल, पूरी उम्मीद करें अब साइड राइज करते एक बार 1760 के लेवल दिखाते हुए मिले और वहां से हम लोग अपने पोजीशन क्लियर करेंगे। हमारी पोजीशन बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती है और हम लोग वेट फॉर अ वाइल और हम लोग इसको अच्छे तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए फिर ही क्लियर करेंगे।
ओके, नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन पूरी तरीके से तेजी के साथ 1760 तक के लेवल, और हम लोग अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लियर कर लेंगे. ग्रेट, वी हैव क्लियर्ड आवर अगेन अ गुड पोजीशन. सेवनटीन 59.5556 वापस से पूरी तरीके से अपसाइड मार्केट स्पाइक मारती हुई. सेवनटीन 60 तक के लेवल पूरी तरीके से मार्केट अपसाइड राइज करती हुई. और हम लोग अब मूव करते हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा की ओर. सो फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा हम लोग ओपन करेंगे. और आज हमारी थर्सडे मार्केट, एंड थर्सडे मार्केट में हम लोग देख सकते हैं कि आज हमारा जो शाम को डेटा देखने को मिला. ओके, सो आज हमारे पास डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हम लोग को कम होते हुए दिखे, और एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, जिसकी वजह से गोल्ड हमारा वापस से टिप्स मारते हुए दिखा. इसके साथ ही एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक, और 7:30 बजे हम लोग को सीएडी का डेटा देखने को मिल रहा था, और इसके साथ ही 8 बजे हम लोग को नेचुरल गैस स्टोरेज के डेटा देखने को मिलेंगे. MT4 टर्मिनल पे चलते हैं तो हम लोग देख सकते हैं प्राइजेस 1760.78, 1761 तक के लेवल्स बनाते हुए. सेवनटीन 61.6367 के लेवल्स. सेवनटीन 61.2524. पूरी तरीके से मार्केट अपसाइड स्पाइक मारती है 1761 तक के लेवल्स पे देखने को मिल रही है इस टाइम पे. सेवनटीन 61.4950 के लेवल. और जिस तरीके से मार्केट ने तेजी दिखाई है 65 तक के लेवल्स वापस से मार्केट के रडार पे आते हुए दिख सकते हैं.
1761.2314 के लेवल्स, 1761.64, 1762 तक के लेवल्स, प्राइजेस पूरी तरीके से अपसाइड राइज करते हुए 1762 तक के लेवल्स बनाते हुए दिख रहे हैं। और हम लोग यहाँ से अपनी एक पोजीशन को शॉर्ट बनाएंगे। हम लोगों ने अपनी एक और पोजीशन कैरी किया जिसको शॉर्ट किया हुआ है। थोड़ी सी करेक्शन 61.4144 के लेवल्स, 1761.7069 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए हम लोगों ने अपनी पोजीशन को शॉर्ट बनाया हुआ है इस उम्मीद में कि 60s के लेवल जो ब्रेक किए हुए एक बार वापस से अगर 60 के लेवल पे आता है, बिकॉज 60 इज द वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल और अभी एक अच्छे सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। सो प्राइजेस अभी भी अपसाइड स्पाइक मारते हुए 1761.8889 के लेवल्स, वापस से स्पाइक 1762.0907, उम्मीद हमारी यही है कि अगर मैक्स टू मैक्स जो डेटा चेंजेस देखने को मिले 65 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद वापस से करेक्शन आती हुई दिखेगी। सेवनटीन 62.1519 पूरी तरीके से मार्केट स्पाइक के साथ 1762.0102 के लेवल्स, पूरी तरीके से अपसाइड स्पाइक के साथ 1762.3345 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए
1762.52. 1762.5251 के लेवल्स प्राइसेस मूव करते हुए 1763 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेवनटीन 62.4445 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जब तक प्राइसेस में मूव देखने को मिलते हैं हम लोग आ जाते हैं अपने क्लिप पे और एक हम लोग गोल्ड की क्लिप देखेंगे। गोल्ड किट को The upcoming Future Blockchain Summit coverage is brought to you by Cook Finance, a revolution in DeFi asset management. We're speaking with Hong Feng, CEO of OKCoin, one of the largest crypto exchanges in the world. Hong, welcome back. Thank you, David. Great to be back. Great to have you back. Now, OKCoin has a number of new listings and offerings that are very exciting. We'll talk about that today. First, let's talk about the crypto markets. Bitcoin, as we speak today, it's up 9%. So huge jump for cryptocurrencies all across the board. It's had a bit of a pullback earlier in the summer, but it's rebounded since then. Bitcoin has actually recovered all its losses since I would say July. Ethereum has not, though. So I wanted to ask you about sort of the differences between Bitcoin and Ethereum in terms of their performance. In the past, whenever we had a bull cycle in Bitcoin, Ethereum tends to outperform. Hasn't been doing that this summer. Why do you think that is? Yeah. So I'll give you what I think. I think this, again, is going back to the fundamentals. There are two sides of the story. On the one side, from a Bitcoin evolution perspective, we see that over the last 6 months, it has been in quote unquote a pullback or consolidation mode from a price perspective. But if you look deeper into the ecosystem, there are actually a lot of positive things going on for Bitcoin. There is further de-risking for the network. If you think about the miner exodus from China, which sent a huge wave of shock through Bitcoin ecosystem and further to the whole crypto world.
in earlier this year, around Mayish, I believe, or April or May. That seems to have been over. The Bitcoin network has recovered from that. The hash rate actually got back to almost the all-time high without any third party intervening. It just naturally go back. That shows the resilience of the network. And then also you see there are a lot of regulatory uncertainty around the crypto space. But Bitcoin is the only, almost quote unquote, the only coin out there that is, there's not much regulatory concern or uncertainty, at least in US. Both Fed and SEC came out recently saying that they're not going to ban Bitcoin, and it's truly decentralized. So from that perspective, I think that level of de-risking for Bitcoin continues over the last 5 months, very quietly in the background, which is playing with strength. The other side of the story for Bitcoin is that there also further development of its value proposition as well in the background. We talked about Bitcoin as a store of value playing out in 2020, and that continues to play out this year, right? When you see the monetary policy continues with various jurisdictions, you see the macro economy, and the price actually increases in US as well. People start to feel it. So that still holds. Yeah. At the same time, there's also a money proposition developing for Bitcoin when you see the first sovereign adoption by El Salvador, which followed by a couple of other countries, and most recently including Cuba. That is interesting because that basically opens the door for the much anticipated usage of Bitcoin as the real money, as the unit of account, and as exchange, medium of exchange happening. And then on the technological side, in that same sense, Lightning Network is actually scaling very nicely over the last year, since starting in 2021. So there are a couple of technical KPIs you want to look at for Lightning. You look at the number of nodes, you look at the number of channels, and you also look at the capacity in the channel. All those three metrics, the number of nodes almost doubled since January 2021. The number of channels also almost doubled, actually more than doubled this year. And then the capacity in the channels reaches about 3,000 BTC most recently. That is, I think, 3 times increase this year. So that speaks to the exponential growth of the Lightning Network as a potential competitor or alternative to Visa, MasterCard, all the legacy payment system that is being built on top of the settlement network, which is the Bitcoin layer. I think the platform could compete. Yeah, the platform definitely could compete with Visa, but we'll still need higher adoption rates of Bitcoin. Absolutely. Not everybody has Bitcoin ready to use for their credit purchases. Yeah. Yeah, but we're seeing that playing out for Bitcoin, and that's why we're seeing it recovering most recently. Then on the other side, when we look at Ethereum to Bitcoin, the trading unit generally has been between, so one Ethereum is generally between 0.1 to 0.3 Bitcoin between end of 2013 to I would say March this year. And then when you look at the after March this year, Ethereum started to pick up in its exchange rate to Bitcoin. Sorry, I shouldn't be saying 0.1. It's 0.01 to 0.03. Now it's last 6 months. It's between 0.0. I want to say 5 to 0.07, and that was mostly driven by the DeFi rise and NFT rise, which a lot of that happens on Ethereum. But back to your point of why over the last month Ethereum seemed to be underperforming Bitcoin. On the one hand, you see Bitcoin coming out of that quote unquote consolidation period because of all the fundamental positive trends for that. On the other hand, for Ethereum in 2017, 18, and even 19 up to summer of 2020 has been the only smart contract platform out there. But starting from end of last year to this year, there have been a couple of emerging alternatives to Ethereum, right? Including Avalanche, including Polygon, including Solana, which is kind of new,
even including Stacks, which is basically a smart contract built on top of Bitcoin. So there are alternatives now, and they're actually solid alternatives. And then also regulatory uncertainty is a little bit higher for Ethereum compared to Bitcoin. So I think there is that playing out as well. So that competitive landscape and the regulatory uncertainty is playing out. When you think about Bitcoin, there's really no alternative. That's the global money network out there, and it's a huge network effect. Ethereum faces more competition than Bitcoin in their use cases. Okay, that makes sense. So this is a chart that illustrates your point here. I've rebased the 2 series to 100 starting from exactly a year ago, Hong. So you can see that since 12 months ago, Ethereum has still greatly outperformed Bitcoin. Interestingly, like I pointed out earlier, you see the blue line, BTC has recovered from most of its losses early in the summer. Ethereum is still not has not yet peaked its or breached its August highs. So if someone were to say to you, well, I think Ethereum is going to flip Bitcoin in terms of market cap, are you seeing data to support that conclusion? Are you seeing trading volume for Ethereum higher on, let's say, OKCoin, for example? I don't think that's totally impossible, but over the long term, my personal view is that I have I see a clearer path forward for Bitcoin as a whole. Ethereum, there's a lot of upside for Ethereum too, and for all the other alternatives to Ethereum, and particularly when you see GameFi coming up as a real interesting use case in metaverse, I think it's going to be really interesting to see how that plays out. So I think there are possibilities out there, but we'll see. Yeah. I have to ask you before we move on to OKCoin, because Bitcoin is having a fantastic run in the last couple of days. Do you still think $100,000 is possible this year? I hold my position. Yeah, you hold my position. Okay, good. By the way, I'm a boring hodler, so I don't trade. I don't target specific time for exit, but I'm long-term positive, bullish on Bitcoin. Let's talk about the psychology. It's very tempting to trade cryptos because you see these big volatile swings and you think, I got to do something right now. But you could just hodl, right? Tell us, you've got some, tell us about OKCoin's products, your earn products, because somebody could just leave it there. And if you are long-term bullish, assuming your long-term bullish thesis is correct, people can just leave it there like a bank account and earn interest on their products. Tell us about that. Yeah, so I do think people are complicated. People probably have different portfolio, and some allocation is probably for hodling, and some are probably for trading, and some are for investing, and different people have different mix. Now, on our platform, you can do anything you want. You can trade, you can hodl, you can invest. You can also participate in the future. Hopefully, we can offer more optionality for that. But on the our earn is directly connected to protocols out there. We don't touch your money. It's basically offering different protocol pools that you can actually go through us and go directly into them and yield whatever market yield is out there. And some of the popular offerings are Stacks and recently listed Miami Coin. We also have AVAX. We have a couple of others, including Compound and Yearn. So that product is quite popular. People like it. It's always good to give people optionality, right? Does the APR vary depending on the price? It's very market driven. We don't know what the APY would be. It's really very much vary by protocol, and within each protocol, within each product, it varies on a daily basis. I see. And just in the price, I've heard from several analysts who are more technical in nature. They tell me that if you consider previous price cycles of Bitcoin, 2013 and 2017, each of these cycles have seen Bitcoin rise to a top, hit a double bottom, and then fall down and then stay flat for years. They're saying, well, this could happen again. I mean, it could, it also could not. But basically, they're drawing parallels to previous price cycles. Do you have any comments on that? I tend to think that there are cycles for Bitcoin too, just because it's naturally designed as a 4-year halving cycle. So I think that plays into the supply and demand story. The other side of things is, I think, the mainstream adoption of Bitcoin, either as store of value or as money, as the kind of a exchange, takes time. It comes in waves, right? And people also mentally, psychologically, we are not
rational animal. We are emotional, so we tend to get overexcited about some things, and then once we see that we are overexcited, we tend to pull back and cool down a little bit. So there's just natural cycles. So yeah, I tend to believe that there are cycles. And for Bitcoin, probably if you zoom out a little bit more, if history tells us anything closer to truth, then it's probably a 4-year cycle. 4-year cycle, but 100,000 first before it collapses, right? Yeah, hopefully. But again, Sure. I'm not betting on. That's true. That's true. All right. Let's talk about OKCoin's newest offerings. Miami Coin, you're the only exchange where we can buy Miami Coin. What is Miami Coin, first and foremost, and why did you decide to pick up on this project? Miami Coin is a project built on Stacks. It's driven by a community who really believes in an experiment like this that can give the citizen in a city a tool for participating in the policymaking. It's a civic exchange alternative. We really like it because we think that it's very much reflecting the ethos of crypto, the ethos of Bitcoin, letting the community decide, and then different participants in the ecosystem act on their own interest, but somehow hopefully can help the policymaker making the right policy, because that gets reflected in how many people will be following the coin, how many people will be, which will be reflected in the market price of the coin, right? And also on the sideline, the city actually get a portion of the reserve, quote unquote reserve of Miami Coin in the pool that they can use as quote unquote income to fund their activities. So I think it's a very interesting community driven project, very much crypto etho driven. And it's very early stage, to be honest. We don't know. Just like in early days of Bitcoin, probably very few people know whether this will a success or not. And similarly here, we don't know whether it will succeed or not. It's very much decided depending on how the community will evolve around it and how much more mechanism will be built into that, driven by all the developers on the community. And this leads to my broader question as to how you pick projects to list. There's thousands and thousands of altcoins. Obviously, not all of them are listed on your exchange. How do you pick coins to list? Yeah, we do have our own process, and that is in compliant with the general requirement of a listing process, i.e. we don't want to list a security, obviously. So we have a team that would look at all the kind of project out there, make decisions on where to start with based on how we see the use case of a certain project, where we see the community, both the user community as well as the developer community, how valid it is, how active people are, how genuinely people are feeling about the decentralized application of that, and also how decentralized that project is, or where it is heading toward. Then we will put it through a legal and compliance review that would look at all kinds of aspects of that risk. Part of it is to manage that risk, manage the legal and compliance risk, make sure that it's not a security. But then part of it is also to make sure that we feel that we are supporting a asset or a crypto community that is truly decentralized in its nature. And then the community will make a decision based on different inputs. And some tokens pass, some tokens don't. Okay, interesting. And you're expanding your footprint on GameFi. Tell us about that. We are. I think this is something that is very interesting and new in 2021, and we are keeping a very close eye on it. I think we talked about this briefly, maybe, when we talk about the overall crypto space. I always see this as development by stages, right? First, you see the monetary layer forming its own shape, which is Bitcoin. And then right on top of it, you see financial system, a decentralized financial system taking shape, which is DeFi that we started to see end of last year. And then what is the critical next step is really developing use case, developing real utility on top of all those two fundamental layers. Only in that way, we don't end up having a financial system playing with itself. You actually have real use cases. And I think for
NFT, it started as almost like the art collectible, right? A digital art collectible where artists can actually help get their own value ascribed, and that can be easily transmitted peer to peer digitally globally. But I think that's only a starting point, and I think that just like real life collectible, it's going to be a very niche market. That's my personal understanding. However, when it comes to GameFi and NFT application in GameFi, that brings up a whole new world of possibility where you actually can have a virtual reality, and there's our native tokens, governance tokens that people can use and can carry from game to game. You know, in an original game, the one of the challenges that distribution of a game is not controlled by game creators, and some of those tokens in different games cannot be carried between games. But in GameFi now, the crypto-enabled GameFi and FTF, that is possible. So I think that is going to be really interesting. We start to see a real use case being developed now on different smart chains, Solana, Ethereum, and others. I just want to say that I was born in the wrong decade. If I was 10, 15 years younger, I would be earning cryptos playing video games. And then my mother would probably let me play games more than she did before. But I want to ask you about the mechanics of how that works. You can still do that. It's not too late. Yeah, maybe my parents will finally be proud of me. It's a combination, GameFi is a combination of DeFi and NFTs, okay? Can you tell us about the mechanics of how this works? Because you could presumably now play video games, like I explained, earn passive income doing that. How does that work? Yeah. Look, we actually have Access listed on our platform, and that is the first one. And I know that it's actually pretty pricey to enter. I think it's kind of $100 or $1,000 getting into the game. But once you are in the game, you can actually use that as a governance token and to make votes for the games, and also use it to buy different pieces in the game, right? And there are different pieces of different value, and that can be actually sold to another individual. So I think that definitely increases the fungibility of the token, and also it carries the token itself becomes its own distribution channel. It's amazing how quick Access has been, Affinity has been able to increase. The game itself has been able to grow its user base. It's only 2 years old game, and now it's like 2 million user. Yeah. It recently had a valuation round as well, I think at 2 to 3 billion by 16Z. So that tells you the ability for a token economics to actually disrupt the original business model of the gaming industry. Basically, the token itself, because of its price, it carries as a distribution mechanism. Don't you see exchanges like yourself potentially partnering with game studios down the line, making a game that will include some aspects of NFTs that people can actually trade on and earn? That is the direction we are exploring. We are a huge fan of interoperability, and we believe that yes, we are historically a quote unquote exchange. But we'd like to think ourselves as a platform, as a place where people actually come. They can either buy and hold in crypto assets, earn crypto assets, or they use it to participate in what they want to participate in. And there's a possibility of working with different game projects to allow them to use the token they buy on our platform and easily get into the games to do those activities is something that we are actively exploring. People have told me about the metaverse. It's an idea where our lives are more intertwined, or become more intertwined with virtual reality. So instead of getting up to go to work, we just stay home and we work virtually in virtual reality. They talk to me about different possible currencies for this metaverse. What do you think those currencies will be? A digital form, the dollar? Could they be NFTs? Could they be another virtual in-game currency that we haven't seen yet? What do you think? I think it can be different things. I think either you call it NFTs or game currencies or other digital currencies. It's really
a token that you use in a certain quote unquote economy to interact with other people, right? And historically, when we talk about economy, that economy is politically defined. I think what we're seeing as a possibility is that with crypto, that economy is no longer confined by political realms, but more by people's interest, by people's different activities. And I am a firm believer in interruptibility. I think ultimately, all these different smart chain contracts platforms where all the different use cases are going to build on, we need to have interruptibility between these chains and also between these chains and Bitcoin, so that everything ultimately can anchor to the only global internet native money, which is Bitcoin. But in those economies, the quote unquote money of that economy is probably enough. Yeah, that makes sense. Finally, let's talk about a new initiative that you're launching, streaming. So you're moving into more of the media side. You're going to be live streaming every Friday at noon, starting on October 8th. Tell us about this initiative, why you're doing this, and some of the guests you plan to have on. Sure. Yeah. No, we're not getting into the media business, David. We don't have that NDA. It's more. I think it's more a way for us to interact with our community, with the customer, and one thing that we realize is that in the crypto space, it's very important to keep that educational piece and fun element there, and that level of community interaction is very important. So we have a recent initiative to start a quote unquote a live stream show called OKCoin Live that comes on every Friday at noon Pacific time. We are actually going to have some very prominent guests on, including Mayor Cyrus from Miami, including the founder of Doge, and including Professor Saifuddin Amos, who I believe you have met before on our. Yes, you've been on the panel with him on Kiko, so great. I'm looking forward to watching this. We'll put the link down below for people who want to access this, so we'll put it in the video description. Hong, thank you so much for coming on the show today. Great thoughts as always. Thank you, and good luck on your new initiatives. Thank you. Bye. And thank you for watching Kiko News. I'm David Lin. The upcoming Future Blockchain Summit coverage is brought to you by Cook Finance, a revolution in DeFi asset management. Okay, so we have completed this clip and we are moving towards MT4 टर्मिनल. तो देख सकते हैं हम लोगों ने जो पोजीशन कैरी की हुई थी 1761.78 के लेवल्स पे, इसको हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे, जो कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के साथ क्लियर होती है दिख रही है. तो हम लोगों ने ये पोजीशन क्लियर कर लिया. अपनी अकाउंट हिस्ट्री पे एक बार देख ले तो हम लोगों ने आज बहुत सारी पोजीशन क्लियर किया. सबसे पहले हम लोग का 2 कॉन्ट्रैक्ट जो कल शॉर्ट किया हुआ था 1761.94 के लेवल्स पे, उसको वापस से बाय किया 1757 पे, $988 के प्रॉफिट. वापस से 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया हुआ है अभी हम लोगों ने 1761.78 के लेवल्स पे, 1759.83 के लेवल्स पे हम लोगों ने वापस से बाय बैक किया और $390 के प्रॉफिट. 2 कॉन्ट्रैक्ट बाय 1758.26 और 1759.35, $200 के प्रॉफिट, और नेक्स्ट 156 और $270. टोटल हम लोग को $1520 के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले से ही हम लोगों ने ट्रेड लेने स्टार्ट किए. फिलहाल 1758-59 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव कर रहे हैं. थोड़ी देर प्राइस का मूव देखेंगे और वापस से हम लोग दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे. $1758.90 के लेवल.
1759.69 के लेवल्स पे वापस से एक शॉर्ट ग्रीन डोजी कैंडल फॉर्म होती हुई। वापस से एक बार अपसाइड स्पाइक मारते हुए 1760.4147 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए एक शॉर्ट ग्रीन डोजी कैंडल के साथ। कोई पोजीशन अभी हम लोग कैरी नहीं करने वाले क्योंकि 4 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम और देखेंगे उसका मूव कैसा है, फिर ही अपनी कोई पोजीशन कैरी करेंगे। अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं कैरी कर रहे हम लोग। 1760.01 1760s के लेवल। 1 मिनट कैंडल का मूव देख लेते हैं तो 1 मिनट कैंडल पूरी कंसोलिडेशन के साथ देखने को मिल रही है 1759.8182 के लेवल्स पे फिलहाल मूव करते हुए। तो हम लोग मूव करते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट की ओर और सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं goldnetdenia.com पे। सो goldnetdenia.com पे गोल्ड के प्राइसेस 1759.4732 के लेवल्स पे मूव करते हुए ओपनिंग से 4.32 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ बात कर ले आज की रेंज की, तो आज की रेंज 1750.90 के लेवल से 1766.96 तक के लेवल्स बनाते हुए दिखी गोल्ड। एंड ओपनिंग 1763.83, प्रीवियस क्लोज 1763.89। एयर वाइज चेंजेस की बात करें तो 135 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, परसेंटेज चेंजेस तो 7.14% की गिरावट के साथ। 52 वीक्स हाई 1965.55, 52 वीक्स लो 1676.10। ग्लोबल मार्केट का मूव देख लेते हैं एक बार। सो ग्लोबल मार्केट हमारी डो जोन्स 30 पॉजिटिव होते हुए, S&P 500 पॉजिटिव, बिटकॉइन नेगेटिव होते हुए दिख रहा है, यूरो स्टॉक्स पॉजिटिव, यूरो बॉन्ड पॉजिटिव, डेक्स 30 पॉजिटिव, निकाई 225 पॉजिटिव, निफ्टी 50 आज पॉजिटिव रहा 17,790, 0.82% की तेजी के साथ। हैंगसेंग पॉजिटिव, ASX 200 पॉजिटिव, ब्रेंट क्रूड ऑयल पॉजिटिव, WTI क्रूड पॉजिटिव, यूरो USD पॉजिटिव। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डाउन होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़े से अप्स बनाते हुए दिखा है इस टाइम पे। सिल्वर स्पॉट पॉजिटिव। आ जाते हैं वापस से MT4 टर्मिनल पे, तो 1758.7684 के लेवल्स पे प्राइसेस वापस से एक बार करेक्शन के साथ देखने को मिल रहा है। सेवनटीन 58.8584। एक दूसरी कैंडल फॉर्म होती हुई 1759.3436 के लेवल्स पे मूव करते हुए।
1759.3435 देख सकते हैं, एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन के साथ फिलहाल देखने को मिल रही है 1759.1918 के लेवल्स पे। देख सकते हैं थोड़ी सी करेक्शन 1758.5972 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए। सेवनटीन 1757 तक के लेवल्स प्राइसेस वापस से करेक्ट होते हुए 1757.9293 के लेवल्स पे। सेवनटीन 57.9698।
1758.3637 के लेवल। सेवनटीन 58.2122 के लेवल्स, प्राइजेस वापस से करेक्शन की ओर। यहाँ से स्टोकेस्टिक ने पूरी तरीके से मोमेंट बना दिया है करेक्शन का। सेवनटीन 58.1826 के लेवल्स। सेवनटीन 57.5773 के लेवल्स 1 मिनट कैंडल पे आ जाते तो 1 मिनट कैंडल पूरी तरीके से डाउन आती हुई 1757.66। आज की क्लोजिंग हम लोग को वापस से डाउन होती हुई दिख रही है, और जिस तरीके से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, वापस से करेक्शन की उम्मीद बनती जा रही है। यानी कि मार्केट वापस से अपसाइड नहीं जाने वाली है, फिर से करेक्शन की उम्मीद देखने को मिल रही है। 1757.2122 के लेवल्स। पूरी तरीके से मार्केट स्टेबल होती 1757 के लेवल्स पे। सेवनटीन 57.1314 के लेवल्स।
1757.1213 थोड़ी सी करेक्शन देख सकते हैं। प्राइसेस पूरी तरीके से इस टाइम स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत सारी पोजीशंस क्लियर कर ली और आज ऑलमोस्ट $1520 के प्रॉफिट पे हम लोग चल रहे हैं। $1757.4044 सो हम लोग की साइड से इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले और हमारा फर्स्ट सेशन पूरी तरीके से ट्रेड पे ही होता है। और आज हम लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेड्स क्लियर की हुई हैं। आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, और एल्स टाइप 100 टू एंड विद दिस सेशन राइट है। ओके, सो हम लोग आज का सेशन अभी यहीं पे एंड करते हैं और बाकी की चीज़ें हम लोग 10 मिनट बाद दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हम लोग अभी इसका सेशन एंड करते हुए देखने को मिल रहा है।